Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I have already started the poem Rain on the Roof by Coates Kinney of class 9. I have already covered first paragraph. So today we are going to do further. Before we start, let me tell you something, that when it rains, the sound of the rain is only the sound of rain for common people. It is the sound of water falling somewhere for the common people. But for the poet, this is not the sound of the raindrops, this is a music. When the raindrops fall at different places, okay, when जो बारिश होती है, when raindrops falls on another places like window panes, tiles, floor, ground, then it gives different sounds. So the poet has told that this is a rhythm, this is a sound, this is a music. Okay, so how the poet thinks, okay, when it rains, जब वो बारिश की बूंदों को सुनता है, हमने पहले पढ़ा था दैट ही वॉज लाइंग इन हिज रूम, ठीक है, एंड लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द रेन. तो हाउ ही फील्स एंड व्हाट ही थिंक्स, दैट वी आर गोइंग टू डू. सो लेट्स स्टार्ट. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. So what he says, that every tinkle means sound of the on the shingle is the wooden tiles of the roof. Okay, because he is in the room and he is listening to the sound of rain falling on the roof. The roof is made of wooden tiles. Has an echo in his heart. तो echo is the reflection of the sound. कि जब हम एक खाली कमरे में बोलेंगे तो उसकी एक जो गूंज है वो हमें सुनाई देगी उसी आवाज़ की. तो the sound comes back to us. So that is echo. So the sound of the rain gives means echo in his heart. उसकी गूंज जो है, उस रेन की गूंज जो है उसको अपने दिल में सुनाई देती है. And by listening to that in his heart means when he felt, or you can say when he feels this sound in his heart, then 1,000 dreamy fancies means 1,000 of imaginations. Fancies means imaginations. Start into busy being start. Busy being means in human being. Human being is used for here poet. Okay, then thousands of imagination starts coming in his mind. And 1,000 recollection is used for memories. Weave their air threads into woof. So many types of memories of past, they starts weaving. Okay, you know very well कि how the cloth is made. कपड़ा कैसे बनता है, कि डिफरेंट जो फाइबर्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, उनको निट किया जाता है. ठीक है, दे आर निटेड टुगेदर टू मेक अ क्लोथ. ठीक है, सो हेयर द सेम थिंग ही हैज़ टोल्ड दैट मेनी मेमोरीज दे स्टार्ट्स वीविंग टुगेदर. द पास्ट मेमोरी स्टार्ट्स वीविंग इन हिज माइंड. उसके दिमाग में बहुत सारी जो मेमोरीज हैं वो आना शुरू हो जाती हैं. इट मीन्स वीविंग मीन्स कम्स इन हिज माइंड. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अबव द रूफ, व्हेन ही लिसन्स टू द साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ. अंडरस्टूड कि व्हाट ही सेज, कि जब बारिश की बूंदें छत के ऊपर गिरती हैं, एट दैट टाइम ही स्टार्ट द डिफरेंट मेमोरीज ऑफ पास्ट स्टार्ट्स कमिंग इन हिज हार्ट एंड माइंड. उसको याद आनी शुरू हो जाती हैं पुरानी मेमोरीज. नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल रीड अबाउट दोज मेमोरीज. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो टू रिगार्ड द डार्लिंग dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. So now
आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट ही इज़ बिजी इन हिज पास्ट मेमोरीज. ठीक है, जब वो बारिश की बूंदें सुनती है तो उसको पुरानी चीज़ें याद आती हैं. सो वट ही रिमेंबर्स नाउ इन हिज मेमोरीज हिज मदर कम्स. उसकी यादों में अब कौन आ रहा है? उसकी मदर. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन. अगोन मीन्स पास टाइम, जो टाइम गुजर चुका है. बिकॉज नाउ हिज मदर इज़ नॉट विद हिम, वेदर शी इज़ डाइड और वेदर शी इज़ नॉट विद हिम. Okay, so he remembers that when earlier times his mother used to come at night to him to regard the darling trimmers. Darling trimmers is used for the children of the mother. Okay, means the poet and his brothers. Okay, to regard means to see, to wish good night, you can say to wish good night or to see the children. Okay, and Aramis before she left them till the dawn. Dawn means early morning. Okay, means she used to stay with them till dawn. ठीक है, मीन्स वो पूरा टाइम तक उनके पास ही रहती थी कि बच्चे सोए हुए हैं. शी लेट देम स्लीप अप टू द मॉर्निंग, और तब तक वो वहीं पे रहती थी. ठीक है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स एट द डॉन शी गोज बैक. सो दैट ही remembers about his mother. Oh, I feel her fond look on me as I listen to the refrain. So here what he says, that now when it is raining, then he feels that she is again with love looking at me. When he feels this, as I list means listen to this refrain. Refrain means the sound of the rain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Means when he listened to this sound of the rain falling on the wooden roof. Okay, by the patter of the rain means the sound of the rain. When he listens this sound of the rain, at that time he thinks that his mother is looking with love at him as she used to look at him earlier. So I hope this poem is clear to you now. Bye. Good job.